Hello everyone, this is Tusar and welcome back to the chem-ignitors. In this video lectures, we will discuss regarding the collision theory, that is otherwise called Lindman's theory behind his name. So Lindman's proposed the theory of that is collision theory. According to collision theory, we have to remember these three reactions. A plus A gives rise to A star plus A, that is activation. A star plus A gives rise to A plus A, that is deactivation. A star gives rise to product, that is reactions. Our syllabus is limited with the postulates of the collision theory. There is no mathematical treatment, so we have to remember some points under the collision theory. तो हमको ए collision theory रे किसी points मन रखियार अछि और ताकू लिखियार अछि 2 marks और 3 marks क्वेश्चन में भी आसी पारे, बट एठी किसी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नाही. तो हमको खाली पोस्टुलेट्स मन रखियार अछि. ओटे रिएक्शन ने कोन होए ना कोलिजन हबो. ए सहित कोलाइड हबो. ए सहित कोलाइड हबो. ए स्टार फॉर्मेशन करियो पुनी ए बाहर जो. ए सहित कोलाइड हला, ए स्टार फॉर्मेशन हला प्लस ए बाहर गला. तो ए स्टार कोन एठी ए स्टार होची एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. एक्चुअली केमिकल रिएक्शन रे रिएक्टेंट रो मॉलिक्यूल कोलाइड हेबे. रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड हेबे आ उडा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करिए और रिएक्टेंट पुनी अलगा हे जो ए सहित माड हला कोलाइड कला. ए गोटे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हे गला जोटा कि ए स्टार प्लस ए. अगेन यहाँ पई दीटा चॉइस अछि. गोटे चॉइस रे कोन होई परियो ये रिएक्शन करि परियो नहले डीएक्टिव होई परियो. देखो ए स्टार और ए सहित मिसी की बैक आसी परियो, बैकवर्ड होई परियो रिएक्शन ए प्लस ए होई परियो. देखो ए स्टार प्लस ए गिव्स राइज टू ए प्लस ए माने ए रिएक्शन रो बैक टा होची सेकंड रिएक्शन. एटी कोन गेला डीएक्टिव हे गेला. या पाखरे दीटा चॉइस अछि, आइदर सेटा रिएक्शन दबो नहले डीएक्टिव हे जिवो. सेकंड स्टेप रे डीएक्टिवेट हे गेला माने बैकवर्ड पळे आसिला. किंतु थर्ड रे रिएक्शन करिछि ए स्टार गिव्स राइज टू प्रोडक्ट. ए स्टार टा कोन देछि प्रोडक्ट देछि. तो फर्स्ट फॉर्मेशन हला एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स रो दुईटा चॉइस अछि, से आइदर डीएक्टिव हबो नहले रिएक्शन दबो. एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आइदर डीएक्टिव हबो नहले रिएक्शन दबो. सेकंड स्टेप रे डीएक्टिविटी हेछि और थर्ड स्टेप रे रिएक्शन देछि. हियर A star is the activated complex. So the postulates are reactants are first postulates is first point होची reactants are made up of molecules and molecules are always in a state of rapid random motion and hence go on colliding with one another. यार अर्थ होची reactant molecules मान को नै कि हेता आ molecules उडा निज निज भीतर collision करंती and also with the walls of the container रो wall सहित भी collision करंती. एक्चुअली रिएक्शन कम हुए collision हुए. कोलिजन रो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुए. एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हला परे से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स टा प्रोडक्ट फॉर्मेशन करे. ताले हम कोलिजन नियत दरकार. सो इट शुड हैव इफेक्टिव कोलिजन. इफेक्टिव कोलिजन होबा सब प्रकार कोलिजन भी रिएक्शन देई पारे ना. रिएक्टेंट्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स and molecules are always in a state of rapid random motion. Random motion means they always exhibit zigzag motion. Random motion माने मन इच्छा से माने मोशन करंती. zigzag motion. ए मॉलिक्यूल मानकर ए मॉलिक्यूल सहित आसी कोलाइड गला, ता पाथ बदली गला, पुनी एड कोलाइड गला, पाथ बदली गला. ए बलिया zigzag motion हुए. एटा को हमें कहउछे रैपिड रैंडम मोशंस. सो रिएक्टेंट मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स and they are always associated with rapid random motions and hence go on colliding with one another. यार साइड मूव करंती निज निज भीतर कोलाइड भी होंती. तापर देछि all intermolecular collisions do not bring about the chemical reaction. Only effective collisions bring about the chemical reaction. केवल effective collision ही reaction दबो. सब प्रकार रो collision reaction देई पारे ना. आ जदी collision टा बहुत slow rate रे हबो ताले reaction केमिति दबो. बॉन्ड तो ब्रेक हबोनी, reaction तो देई परियोनी. तो collision टा केमिति होबा दरकार ना effective होबा दरकार, जोटा कि बॉन्ड ब्रेकिंग रे हेल्प करे. reactant साइड रे बॉन्ड ब्रेक हुए और product साइड रे बॉन्ड फॉर्मेशन हुए. थर्ड पॉइंट इज जी an effective collision is that an effective only effective collisions bring about the chemical reaction. Second point, tala effective collision kono an effective collision is that in which the reactant molecules have threshold energy or more than that and they are properly oriented. Effective collision kono na effective collision ne manakar reactant होची, reactant कोन होची product दोची. ए इफेक्टिव कोलिजन रे रिएक्टेंट रो निज निजर तो एनर्जी अछि, बट निज निजर एनर्जी एते सफिशिएंट नो कि से प्रोडक्ट दे परियो. तो ताको एनर्जी किछि एक्स्ट्रा दरकार. एक्स्ट्रा एनर्जी देले ता भितरे इफेक्टिव कोलिजन हबो.
एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हबो आ से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कोन दबो प्रोडक्ट दबो ताले इफेक्टिव कोलिजन होउची सेया जो थरे मिनिमम हमु दरकार थ्रेशोल्ड एनर्जी रु टिके कमिले भी होबनी बट थ्रेशोल्ड एनर्जी रु अधिक एनर्जी हेले भी चलिबो तो an effective collision is that in which reactant molecules have threshold energy or more than that and are properly oriented गोटे मॉलिक्यूल भितरे प्रॉपर ओरिएंटेड है कि यदि कोलिजन न होला ताले सेटा इफेक्टिव कोलिजन हे परिबनी यदि साइड वाइज कोलाइड हैला ताले इफेक्टिव कोलिजन होबनी कि बॉन्ड ब्रेक होबनी बॉन्ड ब्रेक न हेले रिएक्शन भी हे परिबनी प्रोडक्ट फॉर्मेशन हे परिबनी सो कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन्स एटा तो गला सेकंड पॉइंट द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट हैव मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी टू हैव द इफेक्टिव कोलिजन्स सो एन इफेक्टिव कोलिजन इज दैट in which all reactant molecules have threshold energy or more than that and are properly oriented ताले इफेक्टिव कोलिजन ने कोन हुए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रो मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी दरकार मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी तक दरकार मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी दरकार आउ कोन हबो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रॉपर्ली ओरिएंटेड हबा दरकार नेक्स्ट देछि कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन टेकिंग प्लेस पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड एट ए गिवन टेंपरेचर कोलिजन फ्रीक्वेंसी होची गोटे रिएक्शन कंटेनर भितरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल गोटे गिवन टेंपरेचर रे आ गोटे यूनिट वॉल्यूम रे गोटे सेकंड रे केते थरा कोलाइड होउछंती सेटा होची कोलिजन फ्रीक्वेंसी माने पर सेकंड गोटे सेकंड रे एट ए गिवन टेंपरेचर गोटे यूनिट वॉल्यूम भी नबा गोटे यूनिट वॉल्यूम भितरे केते थरा कोलिजन होची सेटा होची collision frequency so collision frequency is the number of intermolecular collisions that taking place per unit volume per second at a given temperature particular temperature जे vary करिया बदलेबा ताले collision frequency भी बढ़ी पारे काहेना kinetic energy बढ़ियो collision frequency भी बढ़ी पारे next point होची it is evident that there exists a time lag between activation and reaction of molecule during this time lag last point it is evident that there exists a time lag between activation and reaction of molecules and during this time lag the activated molecules could either react or deactivated ए टाइम lag रे कोन हुए activated molecules either react करे नले deactivate हो जाए देखो A star formation हैला एटा activated complex हे गेला ता पई दीटा चॉइस अछि either deactivate होबो नले activation होबो तले either deactivate होबो जो activation और reaction भितरे गोटे टाइम गैप थाए से टाइम गैप रे ये आइदर डीएक्टिव हो जाए माने सेकंड इक्वेशन नहले एक्टिवेट है कि रिएक्शन को स्टार्ट करे A star gives rise to product so there exists a time lag between activation and reaction of molecule and during this time difference or time lag the reactant molecule could either react or deactivated react करिवो equation 3 रे जेंति अछि नहले deactivate हे जो according to equation 2 so this is all about your collision theory thank you all